Hello friends, welcome to study panel. This is Devendra Sejala from Kendriya Vidyalaya Drangadra. In today's video, we shall start the second part of chapter 7. Can you see the pattern? And in this part, we are going to discuss these 5 activities. The first one is magic squares, magic hexagons, numbers and numbers, left right same to same, and palindromes. Now in this video we are going to discuss all these activities in detail, so please stay tuned. Dear students, if you have not watched our part 1, by clicking on the link here you can watch the part 1. Let us move on to the first topic, that is magic squares. Magic square. Do you remember magic triangles? Of course, in our 3rd class and 4th class, we have learned these kind of things, magic triangles and magic squares. Come now, let us make some magic squares. Fill this square using all numbers from 46 to 54. Now see, we have to use 46 to 54 numbers to fill these 9 squares, and we have to place these 9 numbers in such a way that the total of each line should be 150. That means like this, if we will add, it should come 150 here. If we'll add like this, then it should also come to 115. If we'll add like this, then also it should come to 150. Like that we have to do. So now let us do it. This is a square. Now we will, for writing these, now we will take a pen. Here you can see we have to use 46 to 54. That means, and the number of each line and the total of each line should be 150. Now we will add 4 more square here. Like this we will add 4 more square to make this question, this concept very easy. I have added 4 square for you. Now we'll start writing from 46. 46, 47, 48. Now we'll come to the second diagonal part. 49, 50, 51, then 52, 53, 54. Like this we have to write. Now what we have to do, we have to shift this number to exactly opposite side of that square. Now the 54 will shift it here. 54. This 46 will be shifted here. 46. This 52 will be shifted here, and this 48 will be shifted here. We'll also solve 2 to 3 examples of these square. Now suppose if we add all these number, we can see that the total of, now this will be removed. The total of these 3 line will be 54 plus 50 plus 46 is equal to 50. Now we will also add this one, these 3 lines. 49 plus 48 plus 53 is equal to 150. यहाँ भी 150 हो गया. अब ये 3 line, if we add these 3 lines, then also we'll get 150. If we add these 3 lines, then also we'll get 150. If we will add these 3 lines, then also we'll get 130. One more thing here you need to remember, that if we add like this, that means 51 plus 50 plus 48, then also we'll get 150. If we will add these 3 numbers, 47, 50 and 53, then also answer will remain 150. See, this is how we can arrange these numbers from 46 to 54 to get the total of each line 150. We'll solve the second one. Now fill this square using all numbers from 21 to 29. Now remember, here we have to use numbers from 21 to 29. Now our first step is, what is our first step? We will draw 4 square like this. See, this you have to do for all numbers. कोई भी numbers हमें यहाँ पर जिसका total find out करने के लिए बता गया है, कोई भी 9 numbers का, तो उसको यही method से हम लोग follow करेंगे. Now we'll start writing 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. अब क्या करना है, इनको हमें शिफ्ट करना शुरू करना है. कैसे शिफ्ट करेंगे?
ये जो 29 है वो कहाँ जाएगा, इसके ऑपोजिट वाले स्क्वायर में आ गया। ये 21 है वो कहाँ शिफ्ट होगा, इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट वाले 21. This 23 will shift to the opposite square here. और ये वाला 27 है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहां से यहां पर। अब हमारे पास क्या बच गया, अगर स्क्वायर हम लोग देखें तो ये वाला स्क्वायर बन गया। मैं आपके लिए एक और स्क्वायर बना देता हूं ताकि जो है हम लोग इसको क्लियरली देख पाए। लाइक दिस वी विल मेक इट, और इसको अच्छे से लिख लेंगे। 22, 27 एंड 26, 29, 25, 21, 24, 23 एंड 21। अगर अब हम ऐड करना शुरू करते हैं, सबको अगर हम लोग ऐड करते हैं ये तीन नंबर को, देन आवर टोटल इज 75। इन तीनों को ऐड करेंगे देन आवर टोटल इज 75, ये वाला आएगा आंसर। इफ वी विल ऐड दीस थ्री नंबर देन आल्सो आवर टोटल विल बी 75. नाउ वी विल अगेन चेंज द कलर ऑफ द पेन. If we add these three numbers, let me take the pen. अगर हम लोग ये वाले तीन नंबर यूज करेंगे जो वर्टिकली दिए हुए हैं, ये वाले तीन नंबर, then the total is 75. If we'll add like this, total is 75. If we will add like this, total is 75. अब हम ये क्रॉस भी एडिशन करेंगे देन ऑल्सो टोटल विल बी 75, और ये वाला क्रॉस भी एडिशन करेंगे तो भी हमारा टोटल हो जाएगा 75. 75 मतलब 24 प्लस 25 प्लस 26, आवर आंसर विल रिमेन 75. लाइक दिस यू हैव टू डू. नाउ वन आई एम लिविंग फॉर यू. नाउ अरेंज नंबर 101 to 109. The total of each line is 350. Now you have to arrange these 9 numbers in this box. कोई भी 9 consecutive number. Consecutive means 1 2 3 4. These are consecutive numbers. यानी एक के बाद है 101 102. Consecutive मतलब 24 25 26. एक ही लाइन में जो नंबर्स जा रहा है, ऐसे 9 नंबर्स, कोई भी 9 नंबर्स आप ले लीजिए, यहाँ पर ऐड कर सकते हैं. But here you have to use this number 101 to 109, and the totals of each side should come 315. You have to do it by your own. Now come to the next topic. This is a very interesting topic. Magic hexagons. Look at the patterns of numbers in hexagon. Each side has 2 circles and 1 box. See, each side has, this is a side of hexagon. Here we can see 1 square and 2 circle on each side of hexagon. Here also we can see 1 square and 2 circles at each side of hexagon. You get the number in each box by multiplying the numbers in the circle next to it. Now suppose if we want to get the answer of this 98, then we have to multiply these two numbers. So 14 sevens are 98. Now if we want to get this 70, if we want to get the answer of this square, we have to multiply these two numbers. So it is 7 tens are. If we want to get the answer of this square, then we have to multiply these two numbers, that is 5 13s. So we will get the answer. Now one is written for us, 5 13s are, it is 65. Here we can see 14 5s are is equal to 70. Now we will move ahead. Use the same rule to fill the hexagons below. See, here we are having 2 hexagons. We have to fill these hexagons using our previous rule. What we have seen कि अगर ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये वाला बॉक्स आ जाएगा. पहले देखो, इसमें कुछ मल्टीप्लिकेशन हो सकता है कि आपको टेबल्स ना आते हो तो थोड़ा टफ हो, लेकिन पहले उन्हीं नंबर को मल्टीप्लाई करो जो आपको आता है. जैसे सपोज 11 9s are 99. यहाँ तक तो क्लियर है ना. उसके बाद क्या आएगा, 11 9s हो जाएगा. उसके बाद यहां पर हम लोग इसको लिख लेंगे 12 9s are 108. Then 11 6s are 66. After that 17 6s are 102. See, you have to be very clear with your tables. अगर आपको tables नहीं आते हैं तो ये आपके लिए मुश्किल काम हो सकता है. 17 7s are 119. Then here it is 12 7s are 80. Like this we have to fill this hexagons. So यहाँ पर we should start with the P. Now here if we want to find out, we can see it that 78 comes in the table of 13. 13
6 will change the pane. Yes, 13 6 78. Here also 13 8 it is 104. It is clear now. 8 4 it is very clear for us. It is 64. Now here, first of all, we'll sort this one. Then we'll multiply this one. So how many 4s are 64? It is 16 4s are 64. Then 68 it is 128. Here we can see 6 4s it is 24. Likewise, we have to fill this. Now we'll start on the next activity, that is numbers and numbers. Dear students, here you can see 24, 19, 37. Here an is equal to sign. Then here we can see 37, 24 and 19. That means these numbers are reshuffled and written as it is. Means if we change the order of any number, there won't be any change in the answer of that number. Suppose, let me take an example, 7 plus 5 plus 8. Now suppose if I'll write it here, 8 plus 5 plus 7. So now will there any change in the answers? Let us find out. This is 7 plus 5 is 12, 12 plus 8 is 20. 8 plus 5 is 13, 13 plus 7 is 20. So both the numbers are equal. So if we change the order of any number in addition, there won't be any change in the answer. The same thing will be done here. Here we can see 215, 120 and 600. These three numbers are written here. Now in the second part, after is equal to, we have changed the order of these numbers, 600, 215 and 120. Now the question is, are they equal? Yes, of course they are 100% equal. There won't be any change in the answer. Now here are some rules. Fill in the blank spaces in the same way. Now we have to fill in the blanks. Now this is 14. So which two numbers are not written? 34 and 20. In any order we can write. आप चाहे तो यहाँ 20 भी लिख सकते हैं, यहाँ 34 लिख सकते हैं, या यहाँ 34 लिख सकते हैं, तो यहाँ 20 लिख दीजिए, कोई दिक्कत है नहीं. In any order we can write. अब यहाँ 42 नहीं है तो यहाँ पहले 42 लिख देंगे, फिर यहाँ लिख देंगे 65 और 80. आप चाहे तो इसको यहाँ भी शिफ्ट कर सकते हैं, ये वाले नंबर को यहाँ भी शिफ्ट कर सकते हैं, आंसर में कोई चेंज होगा नहीं. Like this we can do. Now here two numbers are written, one is here, so we'll write the last one 400, और यहाँ पर तो दो नंबर लिखना है 200 and 300. तो ये होगा. अब यहाँ पर हमारे हिसाब से हमें लिखना है तो हम लोग लिख देंगे 500, 800 and 300. यहाँ पर लिख लेंगे 300, 500 and 800. Like this we can do. Suppose the main इसमें समझने वाली एक ही बात है कि अगर किसी नंबर का ऑर्डर यहां से यहां चेंज होता है तो आंसर में सेम रहेगा या नहीं रहेगा? यस, आंसर विल बी equal. There won't be any change in the answer. That thing we need to keep in mind. Now look at this, 48 into 13. This is 13 into 48. Now see, check if it is true or not. इसको भी check करेंगे. Suppose I will tell you, we all know that 7 5s are 35. We all also know this one, 5 7s are 35. क्या इसको यहाँ शिफ्ट किया, इसको यहाँ शिफ्ट किया इस वाले में, तो 35 में कुछ चेंज हुआ क्या? नो. That means इनमें भी चेंज होगा क्या? No. Check if it is true or not. Yes, it's true. There won't be any change in the answer or product. मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर आता है उसे हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं. Now left right same to same. Now can you see something special about 1 to 1? क्या 1 to 1 के बारे में कुछ स्पेशल है? Of course it is special. Why? Suppose if we write 1 to 1, अगर हम उसको उल्टा भी लिखते हैं तो भी हमारा आंसर 1 to 1 ही कहलाएगा. यानी इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे, इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे तो हमारा आंसर सेम रहेगा. What? It's just number. See it same forward as well as backward. Oh yes, it is 1 to 1 from right and to left also. From right भी वो 1 to 1 ही रीड किया जाता है, from left to left भी 1 to 1 रीड किया जाता है. Yes. Now come, let's see how to get such numbers. ऐसे नंबर पाने के लिए हमें क्या करना है? Take any number. आपको जो नंबर अच्छा लगता है वो ले लो. हमने ले लिया यहाँ पर
43. टर्न इट बैक टू फ्रंट, उसका उल्टा कर दिया, 3 हमने ले लिया आगे, 4 ले लिया पीछे. Then we will add this. If we'll add these two number 3 plus 4 is equal to 7. 4 plus 3 is equal to 7. So total is 77. Now you reverse the number by writing it back to front. अब इसको अगर उल्टा हम लोग लिखेंगे, इस 7 को यहाँ लिखेंगे, इस 7 को यहाँ लिखेंगे, then also our number will remain same 71, 77. That means उसको अगर फ्रंट से रीड करेंगे, बैक से रीड करेंगे, दोनों में वो 77 ही दिखेगा. Now take another number. एक और नंबर ले लो. आप कोई भी नंबर ऐसे गेस कर सकते हो. So we have taken 48 and we have turned it back to front. इसको उल्टा कर दिया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया? 84 हो गया. अब इन दोनों का प्लस किया, किनका? इन दोनों का प्लस किया तो हमारे पास क्या आंसर आया? इट इज 132. इज दिस अ स्पेशल नंबर? नो. क्या ये स्पेशल नंबर है? नहीं. आगे पीछे से इसको बराबर रीड नहीं कर सकते. सो दिस इज नॉट अ स्पेशल नंबर. सो व्हाट टू डू हियर? अगेन सेम प्रोसेस. 132 लिख दो, उसका रिवर्स लिख दो 231. उसके बाद क्या करना है? उन दोनों को प्लस कर दो. इन दोनों को जो है हम लोग प्लस कर देंगे. सो 2 plus 1 3, 3 plus 3 6 1. अगर दिस इज अ स्पेशल नंबर. व्हाई? बिकॉज इसको अगर हम उल्टा लिखेंगे तो भी ये क्या हो जाएगा? 363 ही लिखेगा. सो दिस इज अ स्पेशल नंबर. नाउ some more examples are given for you, so we have to solve it by our own. So we'll solve it. See, first of all we need to write a number. We have written it and we'll turn from back to forward. This is 82. Now we'll add this, so it will become 1. 8 plus 2 10. 1 is carry. This is 11. So is this a special number? No, this is not a special number. So again we'll write in the reverse order. 0 1 1. Again we'll add this. So this is 1, this is 2 and this is 1. So this is a special number because we can read it from both the sides equal. Now we'll do the second one. 132. इसको reverse order में लिख देंगे हम लोग. 2 3 1. If we will add this 3 6 3, this is a special number. यानी आगे पीछे दोनों साइड से जो है हम लोग इसको बराबर रीड कर पाएंगे. दिस इज अ स्पेशल नंबर. दिस वन इज समवॉट डिफिकल्ट बट लेट अस ट्राई. 273. अगर इसको रिवर्स हम लोग लिखेंगे 372. इफ वी विल ऐड दिस इट विल बिकम 5 4 1 कैरी. इट विल कम टू 6. नाउ दिस इज अगेन रिवर्स लिखेंगे क्योंकि ये स्पेशल नंबर है नहीं, तो हमने रिवर्स लिख लिया. 5 plus 6 हो गया 11. 1 कैरी. 4 plus 4 plus 1 9 हो गया. 6 plus 5 is 11. Is this a special number? No. Again हम इसको उल्टा कर देंगे 1 1. फिर और आगे बढ़ाएंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे. तो अब हमारे पास क्या जवाब आएगा? 2. 9 plus 1 carry 1. This is 1 and this is 3. तो ये आ गया. Is this a special number? नो. और कितना आगे जाना है? जब तक हमें स्पेशल नंबर नहीं मिलता हम लोग इसको आगे जाते जाएंगे. 2013. इसका रिवर्स कर दिया 2013 हो गया. अब ये स्पेशल नंबर हमारा आ गया. See, this is a special number. Yes, it's a special number. आप कोई भी नंबर चूज करके ये काम कर सकते हैं. Now let's use words in a special way. Now there are many words that we can spell from both the sides and we can read that these sentences are equal if we read from either of the sides. No lemons, no melons. अगर इसको हमने यहाँ से रीड किया है तो भी बराबर दिखेगा, मतलब no lemons, no melon दिखेगा. अगर यहाँ से भी रीड करेंगे then no lemons, no melon. Like this, it is same from both the sides. Now here we can see step not on pets. अगर इसको हम यहाँ से रीड करना स्टार्ट करेंगे, step not on pets. So from both the sides these are equal. So these these words are known as, these sentences are known as palindrome. इसको क्या कहते हैं? palindrome. देखो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जैसे है मलयालम. इसको दोनों साइड से रीड करेंगे तो मलयालम ही होगा. फिर लेवल. In Gujarati also when we were studying, one very interesting line is there. Jo chuniya nichu jo. That means from both the sides. देख चुनिया नीचे देख, मतलब दोनों साइड से उसको पढ़ेंगे तो वो सेम ही दिखेगा. जो चुनिया नीचू जो. Like this you have to also find some many more words for this. Dear students, if you feel this video is useful to you, please like, share and subscribe.
Thank you.